absolutely illogical according to me. So this is the first myth that I would like to bust, that you have to study for 10 hours a day continuously for 2 years, only then you can clear the entrance exam. What is more important is studying smartly and studying consistently. It is not the duration which matters per se, it is how well you plan what you want to do and how consistently you do it. So that is what the correct approach is, that studying smart is as important as studying hard, if not more. I have seen personally, I am from 2012 batch DPS Rohini. I have seen people who used to study 8 hours, 10 hours a day and still couldn't clear the exam in 1 or 2 attempts. While many people who used to study 4 or 6 hours a day cleared it in the first attempt. So basically that is what we call that these people are smart people or intelligent or gifted people. But what I personally believe is that what those people did differently was that they studied smartly. They didn't just go after what their institute told them, what the school told them, what their peers told them. They applied their own brains and studied very smartly, which is what I want to explain, how to study smart and how to crack it with the minimum effort. So the smartest person is the one who will be happy and will crack it with the minimum effort. Instead of being sad and morose and studying for 12 hours and then cracking it, that doesn't make you smart. So first of all, you have to understand that you do not have to be the best in this exam. There are so many seats. You have to get one seat. Even the guy who gets rank 1 gets into the same college as the guy who ranks say 5. So you don't have to, it is not like a school competition ki first proficiency चाहिए मुझे सिर्फ scholar नहीं बनना. It's not like that. You have to give in your best and you have to crack the exam, get a seat. That is your goal right now. You do not have to be disheartened that your friend is doing better than you in your school exams, is doing better than you in your coaching, is probably has a higher chance of cracking the exam. The only thing that you want right now is you want to get into a good medical college, and for that you just need one seat. You don't have to be the best, you have to give in your best and you have to be among the top 5 or 10 or 20 people who get in, and after that the game is entirely different. So I'll talk about both the aspects as we move on. So first of all, what is enough? So the main important thing in studying smart for the PMT is to know what is enough, because things are limitless. Your biology, what you read, botany, zoology, human physiology, everything has its own undergraduation, own post graduation. So the entire subject is limitless. So we have a tendency to go into the details, that if someone says that I am probably enjoying botany or enjoying human physiology, that guy has a tendency to go into the depths and start reading it from things, from books which are perhaps not meant for you right now. So what you have to understand is that right now, whatever your passion might be, it is good that if you enjoy what you study, but right now your goal is to know everything to the bare minimum extent which is required to crack the exam. After that, if you want, you can go and read from whatever you want. But right now, since the time is limited, you don't have to go astray. That मुझे chemistry बहुत अच्छी लगी, तो chemistry की बोरॉन की जो book होती है, जो MSc वाले लोग पढ़ते हैं, कि मैं वो पढ़ने लग जाऊंगा. या मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी लगी, मेरा भाई डॉक्टर है, तो मैं उसकी वो वाली बुक से पढ़ रहा हूँ और अपने आप को बैचमेट से स्मार्ट समझ रहा हूँ. सो यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर स्टूपिड इफ यू डू दैट. राइट नाउ तुम्हारा गोल है कि वॉट एवर यू वॉन्ट, end of the school you should be in a position to study what you love. Right now, if you love what you study, then you are very lucky, very good, congrats. But even if you don't, like I'm sorry to say, but I hated physics, I hated chemistry, I hated maths. The only thing I loved was human physiology. I hated botany as well. But I understood it at that point of time कि अभी मेरे को ये पढ़ना है और इसमें अच्छा करना है, so that I can get in, so that 10 years later I am able to study what I love. अब 8 साल बाद स्कूल से पास करने के बाद I passed out in 2012 with 20. I have been studying for 8 years throughout MBBS, throughout MD. आज finally after 8 years I am studying what I love. I am finally what I study has some implication. It helps me save someone's life in a direct way. Till now, whatever I studied was indirect. It just helped me crack exams and enter an institution which I wanted and get a degree which I wanted. So right now, what you have to do is you have to focus on what is important. So first of all, the most important thing for you people right now is your NCERT book. The NCERT
according to my own personal experience, the NCERT in biology and in chemistry, especially for organic and inorganic chemistry, is the Bible. Otherwise, physical chemistry and physics are more of problem solving and need conceptual clarity no matter where you get it from. You get it from your school, you get it from your institute, you get it from your friends, you get it from the notes you make, but you need to have your concepts clear and be able to solve them. But for organic, inorganic, and biology, these things are largely fact based. There is no concept that you have to solve. There is a concept behind biology, behind organic, which you have to understand, but there are no problem solving as such. All the questions are direct. You either know them or you don't. There's no in between, unlike in physics, where you have to solve and you might get a correct answer, you might not. So these things are specially very important to be thorough with your NCRTs. And in any case, you people are in 12th and you have to give your board exams. So NCRT will help you in both. So you have to make the NCRT your Bible and make sure that by the end of 12th, when you are ready to give your PMT, then you are at least thorough with your NCRTs for your bio and your organic and inorganic. And obviously the concept for physics and the physical part of chemistry from 12th at least. So when you finish it with your board exams, you don't say I am done with my boards. You say I am done with the 12th syllabus, both for my board exams as well as for my PMT. And the only thing that is left is the 11th, which you have to revise, which I am sure you must have done pretty well last year as well. So you have to understand that there are no two different goals which you are targeting, which many people make a mistake. You are not targeting for PMT on one hand and for the board exams on the other. Both are basically the same. You don't have to run for marks and try and see कि किस चीज़ से बोर्ड के पेपर में मार्क्स मिलते हैं. तुम्हें ये समझना है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने उसको लिख दिया, अगर अच्छे मार्क्स आए तो probably the teacher understood it, probably she didn't, but मैंने तो बिल्कुल क्लियर लिखा था. I'll give you an example. For example, when I was in 11th or 12th, so Shelly ma'am used to teach us and we used to learn the cardiac cycle कि systole diastole होता है, 0.1 second 0.8 second total होता है. So there's this really cool concept about learning the cardiac cycle which my friend had taught me, which was a box diagram. There were 8.1 second के boxes and उसमें वो बना के दिखा देते थे कि ये systole है, ये diastole है, यहाँ पे ये valve close होता है, वो valve close होता है. So what, this is something all my friends knew, but they thought that the teacher in the school or the one checking the board exams is probably going to go directly जो NCERT में image बना है वैसा बनाना है. But I thought कि why waste time in explaining a concept which I have already understood, because what matters is my understanding. So in my school exam I made that exact same diagram and explain it, and I was fortunate to have teachers like Shelly ma'am who really appreciated it and gave me the full marks. And she even said कि ये अच्छा concept है सिखाने के लिए कि ऐसे cardiac cycle होता है. So you don't have to impress someone by writing in your theory exam. You have to make sure that your concepts are sound and give the theory exams and be done with them. That is how you prepare for your PMT. So your NCERT is the Bible. And another thing is that we often tend to become demotivated while studying. कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं था तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्या बकवास है, व्हाई एम आई लर्निंग द रिएक्शन चेन, व्हाई एम आई लर्निंग कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है और अर्थवर्म के सेगमेंट में क्या होता है. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू लव दैट वेरी गुड, इफ़ यू लव इट फ्रॉम योर हार्ट, बायोलॉजी एंथुजियास्ट तो तुम बहुत अच्छी बात है. बट इफ़ यू डोंट, then you have to remember one thing: if you want to be a doctor, you are studying to save lives. It is probably unfortunate that our system is geared in such a way that we are choosing who is fit enough to become a doctor by seeing that who can solve those physics complex equations or the chemistry equations or ratify basic core concepts which are absolutely useless. But whatever it is right now you have to study, and whenever you study you think कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो I am helping the world, कि this study will help me get into a place where I want to, and this will help me save lives later on. There is no point in cribbing कि ये बिल्कुल unjust world है, idiotic syllabus है, बोर्ड के एग्ज़ाम में सही होता है, कोचिंग वाले कुछ भी पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछते हैं. You have to study with the mindset कि what I am doing right now, even if I don't like it, I have to somehow clear the exam so that I can study what I love 5 years, 10 years from now. So whenever you study, you have to study with the correct mindset, not just mug up facts or crib and cry.
And there's another thing I would like to tell you. It's not as hard as it is generally believed to get into a good government college for doing MBBS. This is a data I searched up for you guys. So this is from the internet. So basically it says that there are around 41,000 government college seats in India. So I don't think it's as tough as people believe it to be. तो बहुत सारी सीट्स हैं, तुम्हें एक ही सीट चाहिए. यू डोंट हैव टू नेसेसरीली बी द बेस्ट, यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट एंड यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, डू वेल इन योर बोर्ड्स, बी हैप्पी इन लाइफ. एंड जो बाद की चीज़ें हैं वो बाद में कॉलेज में जाने के बाद डिसाइड होती है. So according to this, in Delhi itself, there are around 1,000 seats which have recently increased. This is the 2020 data. Initially they were lesser. अभी 1,000 के around seats है दिल्ली में. तो अगर तुम दिल्ली के 1,000 में आना is not a big deal. You are in one of the finest schools in the country or city, whatever, and you are amongst the finest people in that school. So it's, I don't think, a big deal to crack a very small exam and be amongst the 1,000 people in Delhi and 40,000 people in India. तो इतना बड़ा माहौल है नहीं जितना बनाया जा रहा है. In Delhi, this is the list of colleges in Delhi. So अभी तो नीट हो गया है. So हमारे टाइम पे there used to be this AIPMT and DPMT. तो DPMT में तब के टाइम पे 3 कॉलेज होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग एंड यूनिवर्सिटी UCMS. तो अब तब अलग एग्जाम होता था. तो अब तो इट्स इवन सिंपलर कि ये 3 की जगह. सो नाउ you can target for all of these other than AIMS. AIMS is a different exam and AIMS has around 35-40 odd seats, but AIMS is also, मतलब उतना बुरा नहीं है, बट मेरा हुआ नहीं था, बट उतना मुश्किल नहीं है, हमारे स्कूल के बहुत लोगों का हुआ है. तो उसके अलावा इतने सारे कॉलेजेस हैं, एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को तुम्हें क्लियर करना है, वो भी लार्जली NCERT बेस्ड है, स्मार्ट स्टडी बेस्ड है, तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील. So you have so many thousand seats in all these colleges. These 3 are the colleges in the Delhi University. अभी वो concept change हो गया. So basically now I would like to take in any doubts, or if you want I can finish in 5-10 minutes and take in the doubts at the end of the session, whatever you prefer. तो अभी as of now, if you have any doubts with regard to preparation of the PMT, कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, छोड़ने का मन कर रहा है, वर्थलेस लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि अभी पॉइंट नहीं है पढ़ने का, इतना अच्छा है भी नहीं, तो if you have any doubts pertaining to the preparation of the PMT in general right now, I would like to take them now. Excuse me, sir. Yeah. I have a few questions, like not one but few. Yeah, sure. Right. First, I want to get into AIMS, so how should I go about it? See, that is exactly what I said. You see, if you want to get into AIMS, or say you want to get into Maulana Azad, or you want to get into Army College, whatever. So the preparation is not different if you want to get into AIMS or into any of the colleges. The prep, or even for your boards, the preparation is the same. It is the same physics, chemistry, biology, and those very concepts are being tested in all the exams. That is something that you have to understand. You can't segregate your study into ये एम्स के लिए पढ़ाई है, ये PMT के लिए पढ़ाई है, ये बोर्ड के लिए पढ़ाई है, ये मेरे वेडनेसडे टेस्ट के लिए पढ़ाई है. जो तुम वेडनेसडे टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, अगर वो तुम्हारे एम्स एग्जाम में काम नहीं आ रहा तो वो बेकार है. वेडनेसडे टेस्ट के मार्क्स कोई लाइफ में पूछेगा नहीं तुमसे. तो अगर तुम उसको सिर्फ एक बार रट के वॉमिट करके आ रहे हो, देन आई डोंट थिंक यू कैन डू अ बिगर मिस्टेक देन दैट. जो तुम्हारी एम्स की पढ़ाई है, विच इज एग्जैक्टली द सेम as what you study, it is just that you have to understand the details much into the depth and finer details समझनी है तुम्हें. Right. Another one is कि lockdown के time पे मेरी productivity has gone like it's gone down the drain. I used to study well, my concentration was better, and now it's hampering me. So how should I go about it? See, well, to answer that, lockdown में सबकी productivity कम हो गई है. I don't understand how. I have been able to, I wanted to talk to people in school ever since I joined college way back in 2012, but I never got the time. अभी मुझे खुद को कोविड हुआ है रिसेंट. अभी आई एम होम क्वारंटीन, मेरे घर के बाहर बोर्ड है, मैं बाहर जा नहीं सकता. तो आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, बिकॉज आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट इन अ मोर इफेक्टिव वे, कि खाली टाइम मिल गया. So that is something you must understand.
कि you have to use this lockdown as a blessing in disguise. There are people I know जो ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा करते हैं, और people who join कोटा जो राजस्थान में for they join dummy schools and what not so that they can get this free time that you are getting right now. People genuinely yearn for this time कि मुझे ऐसा कुछ मिले कि मेरे को जाना ना पड़े कहीं घर से बाहर, और नेट पे सब कुछ हो जाए, स्कूल यहीं पे हो जाए, ट्रैवलिंग टाइम बच जाए. This is actually a blessing in disguise for you. When I was in 12th, I don't know if Shelly ma'am remembers. I used to when I was in 12th, one fine day after coming back from school, I slept in the evening, and when I woke up, I couldn't move. I had this stiff back, absolutely stiff back, and I couldn't move at all. So I was dead scared कि अब तो हो गया भाई, डॉक्टर वॉक्टर तो क्या बनना है, यहाँ तो मरीज बनना पड़ गया. So उसके बाद I consulted a few doctors and what I got the MRIs done, and finally they told me कि it is just muscular sprain from studying too much probably, or for sitting in a bad posture, which I'm doing right now also, from sitting in a bad posture for very long hours. तो दे साइड कि बेटा अभी तुम्हें 3 हफ्ते तो कम से कम बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कोई स्कूल नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, घर पे बैठो. तो इनिशियली तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही ख़राब हो गया, ज़िंदगी में नुकसान हो गया. बट लुकिंग बैक आई फील दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी. वो 3 हफ्ते में मैंने जो पढ़ाई की थी ना, मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी. कि तुम्हें स्कूल का टाइम बच गया, जाने का, आने जाने का, तुम्हें जहाँ कोचिंग वोचिंग पे जाते थे वहाँ का बच गया, फालतू में जो तुम्हारे दोस्त आके तुम्हारा टाइम वेस्ट करते थे प्रॉबली वो बच गया. सो नाउ you can focus on what is really important, and you can probably devote your time to some of your other interests also. You can probably exercise. YouTube पे वीडियो होती है, मैं भेज दूंगा तुम्हें एक्सरसाइज करने की, 10 मिनट में एक्सरसाइज. सो यू कैन genuinely use this time. You are probably lucky that you got 4, 5, 6 months whatever, and I don't know how long this will last, but you are lucky that you got this much of productive time, and you can always attend school and whatever classes you want online. So I think it is a blessing in disguise, not a curse, till you get COVID like me. Okay, last question. Yeah. Right. So what I'm assuming that you were in Akash as well, because Himanshi is in Akash. Yeah, I am. I was in Akash. Yeah. So what about AIATS? So I'd like to tell you one thing which I keep telling my sister, and probably she doesn't listen to me. But see, AIATS is like your Wednesday test. A Wednesday test doesn't define who does well in the half yearlies and in the boards and in the end year exams. So AITS is meant to probably to streamline what you study. You can plan your study around that. But if you are it's the same as the concept behind the Wednesday test. But लोग क्या करते हैं कि Wednesday test को वो बना लेते हैं कि भाई मेरा तो खराब हो गया, तो उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए ज़बरदस्ती आधा अधूरा पढ़ के जा रहे हैं जस्ट क्योंकि कल टेस्ट है. तो आई थिंक दैट इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू. कोई तुमसे 10 साल बाद ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे 11th के सेकंड वेंडरे टेस्ट बायो में कितने मार्क्स आए थे. बोल देना 20 आए थे, किसी को नहीं पता चलेगा. सेम इज़ फॉर AITS. अगर तुम्हारा PMT हो जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारे आकाश के AITS में कितने आए थे. एंड दोज रैंक्स आर नॉट रियली सी. अगर इफ़ यू आर प्लानिंग योर स्टडी अराउंड दोज टेस्ट कि ये टेस्ट तब है 2 हफ्ते बाद, अभी मैं 2 हफ्ते में ये सिलेबस पूरा करूँगा, then it is good, it is useful, and your rank is reflective of where you stand. But if you are unable to meet target, say for example, तो तुम probably उस AITS को छोड़ दो या कम पढ़ के दे दो और समझो कि ये मेरा टारगेट एग्जाम ही नहीं था, इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया, आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट. तो उस रैंक को लेके रोना नहीं है. तुम्हें बस यही करना है कि यू हैव टू प्लान योर स्टडी. यू हैव टू आइदर प्लान इट विद रिस्पेक्ट टू द AITS और योर वेंसडे टेस्ट, एंड देन कि उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लिया तो अच्छी बात है. अगर नहीं कर पाए और उसमें कम मार्क्स आए तो तुम लार्जर गोल को देखते हुए चल रहे हो, तो तुम हारे नहीं हो. फॉर एग्जांपल मेरे AITS में जो फर्स्ट AITS हुआ था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 आई थी. तो लोगों को लगा कि ये तो भाई बॉन्ड है, इसका बहुत अच्छा होने वाला है. नेक्स्ट AITS में मेरी रैंक 500 आई, क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं गया था उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि AITS में रैंक ला के मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है. ये वाला टॉपिक मेरे को अभी नहीं पढ़ना है, मेरे प्रॉब्लम स्कूल में नहीं चल रहा है, मेरे एग्जाम में नहीं आ रहा है, आई वुड स्टडी लेटर ऑन. तो बाद में मैं अटेम्प्ट करूँगा तो शायद वो 500 की जगह 5 आती. तो टेस्ट इन लाइफ, एनी टेस्ट इन लाइफ, इन स्कूल, इन वॉट एवर, डज नॉट मैटर. तुम्हारा जो लार्जर गोल है दैट इज योर PMT एंड द बोर्ड्स, उसकी तरफ तुम्हें पढ़ना है. आई होप दैट आंसर्स इट.
Thank you so much. Thank you. Are there any other questions? I have a doubt. Yeah. I didn't study properly in class 11, so I haven't covered the syllabus of class 11. I have to do 11th and 12th side by side now. So how should I do that? मतलब कौन से chapters ऐसे करूँ पहले या मतलब सब कुछ करती रहूँ साथ साथ? देखो ऐसा है कि 11th तो यार किसी की भी अच्छी नहीं होती है. आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन. आई वाज इन मैमसी, सो मेरे फ्रेंड जो थे उनकी मतलब मेरी तो उतनी अच्छी रैंक नहीं थी, बट मेरे दोस्तों की रैंक 1 2 3 5 ऐसे वाली रैंक वाले लोग थे पीएमटी. किसी की भी 11th उसके अकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती. उसको यही लगता है कि मेरा भी बचा है. सो द स्मार्ट वे टू डील विद इट इज़ कि राइट नाउ से यू आर इन द लॉकडाउन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, सो यू कैन फोकस अ लिटिल मोर ऑन 11th as compared to 12. Like you don't need to keep revising the old 12th topics which you have already done. You can probably just read enough to be in line with what is going on. कि 12th के तुम नए नए टॉपिक टाइम पे पढ़ते जा रहे हो, पुराने probably you are not able to revise. रिवाइज जो करना है अभी वो 11th रिवाइज करो. दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू 11th इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीएमटी. 12th तुम बेसिक करते जाओ, नया 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 नया, एंड 11th रिवाइज करते जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा 12th की रिवीजन है वो तो इन एनी केस तुम अपने प्री बोर्ड्स के लिए एंड में बहुत अच्छे से करने वाले हो. तो एंड में आई थिंक व्हाट आई पर्सनली फील, एंड दिस हैज़ बीन व्हाट माय लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु क्लियर्ड द पीएमटी फील, कि 12th का इनिशियल जो पार्ट है एंड द टिल द मिड हाफ, that should be focused largely on doing and revising your 11th and doing new topics of 12th without revising them. And जो last 1/4 या probably half जो 12th होता है, that should be focused entirely on the 12th. and after the board exams जो time होता है वो फिर से 11th. तो तुम्हें ऐसे प्लान करना है कि अभी तुम 11th पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करो और एंड में 12th पे फोकस करना. फिर वो तुम्हें दोनों जगह काम आएगा, बोर्ड में भी और वो भी. अगर अभी तुम 12th बार बार रिवाइज करते हो और बोर्ड से जस्ट पहले 11th रिवाइज करके जाते हो तो उतना फ्रूटफुल नहीं होता. दैट इज व्हाट आई बिलीव. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? All right, so I'll go ahead then if there are no questions. All right, so another thing which I always felt while I was in MBBS was that as students in school or preparing for the PMT, we genuinely have very little idea of what actually goes on in the life of a doctor or what actually goes on in medical school. We are probably fascinated by the idea of seeing someone whom we know or any doctor we have visited, and we probably take it as a knee jerk reflex कि इंटेलिजेंट लोग बायो लेते हैं तो बायो ले लेते हैं, है ना. मतलब आई डोंट नो, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि ले लिया फ्लो में ले लिया, फ्लो में पीएमटी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, पता ही नहीं. तो आई always feel that it is always smarter if you have a basic idea of what actually you are preparing for, like what lies ahead. So it's always good to have a basic idea of what happens. So I will talk about medicine as a branch. So सबसे पहले तो there are two kinds of people. एक होते हैं जिनको एंड रिजल्ट पसंद होता है, जैसे मैं हूँ कि मुझे हमेशा बचपन से डॉक्टर ही बनना था, ठीक है, और मुझे डॉक्टर में भी मेडिसिन ही करनी थी. सो आई एम समवन हु, एज आई टोल्ड यू, स्टडीड ऑल हिज लाइफ टू गेट वेयर आई वांटेड टू गेट. आई डिडंट रियली लाइक द सब्जेक्ट्स, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई जस्ट स्टडीड देम क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे टू रीच है. एंड द अदर काइंड ऑफ पीपल इज हु एंजॉय द सब्जेक्ट, की जो होते हैं ना फिजिक्स के करके उनको बहुत मज़ा आ जाता है कि फिजिक्स पढ़ के ही मज़ा आ गया, कि उनको बोलो ब्रेक है तो वो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाके. तो वैसे वाले लोग भी होते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन इफ यू आर नॉट अमंग्स द लकी लैटर ग्रुप जिसको फिजिक्स पढ़ के ही मज़ा आ जाता है, स्टिल यू कैन डू वेरी वेल और प्रोबेबली इवन बेटर दैन द गाय जिसको फिजिक्स पढ़ के ही मज़ा आ जाता है. तो उसके लिए तुम्हें ये समझना है कि तुम या तो तुम्हें अभी जो तुम कर रहे हो उससे प्यार हो, या फिर जो तुम कल करोगे जो तुम्हें दिख रहा है कि ये मैं करूँगा उससे प्यार हो. तो तुम्हें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कोई एक तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें. जब तक प्यार नहीं होगा तो अच्छा नहीं हो पाएगा. या तो फिजिक्स से कर लो या मेडिसिन से कर लो, जो तुम बाद में करोगे. तो मेरे को फिजिक्स से तो था नहीं, मैं मेडिसिन के बारे में बता सकता हूँ. तो मेडिसिन के बारे में आई गॉट फ्यू कोट्स अबाउट मेडिसिन विच आई लव. सो दिस इज द फर्स्ट कोट. ये बोलते हैं कि आर्ट ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट इन अम्यूजिंग द पेशेंट वाइल नेचर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट medicine is not about just a few organs and giving a few medicines and making them all right. You're treating the person,
you're treating the disease. ठीक है. So जो medicine is also an art. जो हम बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़ को आर्ट्स बोलते हैं पुराने ज़माने में, और ये बोलते हैं बायोलॉजी एंड साइंसेस. साइंस वाइंस ठीक है, बट मेडिसिन जो आर्ट है ना, आई फील इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट्स. एंड आई फील, मतलब इन माई ओन पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट कैन befall any person to be a doctor. And I absolutely love being one. And I feel that if you are genuinely in love with medicine, in love with the idea of being a doctor, then you would automatically have the inspiration and the courage to like study well. And obviously अगर तुम्हें end result बहुत ही पसंद है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. तुम्हें जितनी भी problems है, you will find solutions खुद से. जो वो बोलते हैं ना, इट्स कॉल्ड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर इंड्यूस्ड एनाल्जेसिया, कि जो सोल्जर होता है ना, जब उसको सामने विक्ट्री दिख रही होती है तो उसको कितनी भी बुलेट्स लग जाए तो उसको पूछना नहीं पड़ता कि बुलेट लगी है तो क्या करना है, वो खुद ही भागता है क्योंकि उसको वो एंड गोल बहुत अच्छा दिख रहा होता है. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, यू शुड डेवलप दैट लव फॉर मेडिसिन. दैट इज समथिंग माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर टेल्स मी कि अभी हमें क्या मतलब है कि अभी तो हम 11th-12th में हैं. तो जब तक तुम्हें एंड गोल से प्यार होगा ना, जब बहुत ज़्यादा, तो तुम ऑब्वियसली अपने आप सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लोगे. सो दैट्स व्हाट दे से, इट्स नॉट ओनली अ साइंस, इट्स एन आर्ट. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑब्वियसली अभी पैंडेमिक हो गया है तो थैंकफुली डॉक्टर्स की थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, पहले कम हो गई थी सोसाइटी में आई थिंक. बट आई एम टेलिंग यू दैट इफ समवन इज एब्सोल्युटली गुड इन स्टडिंग and doesn't mind sitting for long hours, medicine is the way to go. And this is my favorite quote. So it's a science of uncertainty and art of probability. Ki whatever we do, it's always uncertain and it's always a percentage. COVID ka mortality rate they say is 1.5%, but you don't know who might be in that 1.5. मुझे I am COVID positive right now, so I know कि 1.5% तो है बेटा, कितना भी हो, कुछ पता नहीं है. So that this is true for medicine, this is true for life, this is true for your PMT exam, this is true for your board exam, this is true for absolutely anything, that everything is uncertain and it is only a probability. What you might feel कि ये वाला बंदा तो हमारे बैच का टॉपर है, he will probably top the PMT or be the board topper or whatever, you never know. Someone very average might do absolutely amazing later on in life or even in your exams, and somebody who's absolutely brilliant and has been the topper throughout, उसका एकदम से कुछ पता नहीं है कि वो थक भी जाए भाई. ठीक है, you understand कि everything is uncertain and is just a probability. So you have to embrace that probability happily, कि उससे डरना नहीं है तुम्हें, कि यही समझना है कि if you are not amongst the best, like if you are an average student, then you have to understand कि ऐसे बहुत सारे एवरेज लोग लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं. आई वॉज प्रॉबली, मतलब आई डोंट नो, आई वॉज प्रॉबली एन एवरेज स्टूडेंट, नेवर रियली टॉप्ड इन स्कूल और एनीथिंग, बट आई डिड द बेस्ट इन द PMT, आई डिड द बेस्ट इन द PG एग्जाम ऑल्सो. सो it is always, dynamics keep changing, you understand. Especially medicine, it's true for anything in life, but especially medicine, because लंबे 15 साल की 10 साल की पढ़ाई होती है बाद में. So it's more like a marathon, it's not a 100-meter race कि जो तेज भागता है वो जीत जाता है. तो मैराथन में जो तेज भागता है वो नहीं जीतता, जो लंबा भागता है और कंसिस्टेंट भागता है वो जीतता है. And also it's a different kind of marathon where the last lap has the maximum value, not the first one. If you study just enough to clear your exams, just enough to get into a decent or in a good college, then but you have that bent of mind कि मुझे लंबे समय तक, लंबे सालों तक पढ़ना है, बाद में ज़्यादा पढ़ना है, तो you will probably emerge as the winner later on, instead of someone जो कि एक Wednesday टेस्ट के लिए या एक हाफ ईयरली के लिए पूरी जान लगा देता है और फिर बाद में उसका एक महीने का रेस्ट करने में लगा देता है. So you have to understand that it is a long race. You have a long time to go till your PMT and your board exams right now. So you have to be consistent. You don't have to burn yourself out. लॉकडाउन में बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब अगर आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है. अगर ये मतलब नहीं है कि आप 16 घंटे एक दिन में पढ़ो, एक महीने तक 16 घंटे पढ़ा फिर परेशान होकर गिव अप ही कर दिया. तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ. इफ़ यू कैन स्टडी फॉर 6, 8, 10 hours whatever and be happy doing it, and probably take care of your other interests, of your health, of your family, of relationships with other people,
then that's a good thing. So well, I am about to end my slide. So this is what this is the slide I was shown when I cleared my PMT. कि जब लोगों का PMT clear होता है तो ऐसे it's like a mountain that MBBS it's very difficult to clear, and if someone clears it then he is absolutely happy कि आप तो settle हो गया, डॉक्टर बन गया, जिंदगी सेट है. And this is what happens later on. Because I never knew when I was preparing for the PMT कि MBBS के बाद एक यहाँ पे एक और नीट होता है जो ये वाली फिश है. This is the second नीट. ये नीट होता है MD एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो इससे भी मुश्किल होता है, जिसमें सारे सिलेक्टेड लोग जो MBBS करके जो ब्राइटेस्ट ब्रेन्स ऑफ द सो कॉल्ड ब्राइटेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री MBBS करके आए हैं, फिर वो सब लोग ये देते हैं और फिर वो MD के लिए पढ़ाई करते हैं, विच इज़ द पोस्ट ग्रेजुएशन. तो इसमें पता चलता है कि जो तुम्हारे स्कूल का टॉपर था जब तुम यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सभी अपने स्कूल के टॉपर हैं. फिर वो सब टॉपर लोग मिलके एक एग्ज़ाम देते हैं जिसमें MD मिलती है. तो फिर जब तुम MD करते हो, यहाँ पे खड़े होते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि नहीं, अभी तो एक और है, इसके बाद सुपर स्पेशलिटी भी होती है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी होती है, उसके लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, उसका भी नाम नीट ही है. फिर तुम जब यहाँ पे पहुँचते हो तो तुम्हें पता चलता है अच्छा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी जो सिर्फ हार्ट की रिदम देता है वो भी एक सुपर स्पेशलिस्ट होता है जो उसके भी बाद है, तो उसका भी एक एग्ज़ाम है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट chasing exams is not a very wise thing to do. You have to be happy doing what you do and be wise enough to understand कि ये मेरा गोल है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, but I am not too attached to it. वो बोलते हैं this is a concept which is called the concept of ladders. कि whenever you reach the top of another ladder, whenever you reach the top of a ladder, you find yourself at the bottom of another one. So if you derive pleasure in reaching the top of the ladders, then it's not a very sustainable thing to do. कि तुम्हें अगर स्कूल में टॉप करके बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करने वाला मेरे भाई. अगर तुम्हें पढ़ के और प्रोसेस में मज़ा आ रहा है तभी तुम जीत पाओगे. अगर तुम सिर्फ विक्ट्री से जो एंडोर्फिन रिलीज हो रहे हैं उससे खुश हो रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी सस्टेनेबल थिंग टू डू. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में एग्ज़ाम होते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, but you have to be happy and content in doing what you do. So that is what they say कि success is not the key to happiness, happiness is the key to success. We'll find out that end of the day जो भी PMT PG जो भी होगा तुम्हारा, all the people who do well are the ones who are really happy or content in doing what they do. You don't have to compete with anyone. कोई भी competitor नहीं है तुम्हारा. It's just कि तुम्हें अपने आप से कम्पीट करना है. एंड ऑफ द डे एक सीट चाहिए MBBS की, ये गोल होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PMT की मुझे एक सीट चाहिए. आई डोंट केयर कि मेरे फ्रेंड को उससे बेटर कॉलेज में मिल जाए, कम कॉलेज में मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मतलब मेरे जो बैचमेट्स हैं जिन्होंने एम्स में 30 सीट्स होती हैं, द बेस्ट कॉलेज इज एम्स, उसके बाद मैमसी सेकेंड आता है, तो जिनका एम्स में हुआ था तब उनमें से कितने सारे लोगों का MD अभी तक नहीं हुआ, वो 2-3 साल ड्रॉप कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द MD. प्रॉबली क्यों? क्योंकि उनको एक लैडर टॉप पे मिल गए, उनको लगा कि अब खत्म हो गई गेम, बट गेम खत्म नहीं हुई थी. सो दैट इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि समवन जस्ट आस्क्ड मी कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एम्स. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर एम्स, बट यू शुड always understand that getting into AIIMS is not the end of the world, not getting into AIIMS is also not the end of the world. You have to be happy and content in what you do, and then things are sorted, otherwise they are not. I would like to end the presentation here. So as ma'am introduced, I am Abhinav Agarwal from 2012 batch DPS. I did my MBBS from Maulana Azad and I am doing my MD internal medicine final year from UCMS and GTB Hospital. This is my email ID and my phone number. In case you have any doubt, if I can help you in any capacity, I'd be more than happy to do it. That's it from my side. If you have any questions, I would love to take them. Good afternoon. Can you hear me, sir? Yes. Okay, so my question was, what do you suggest? Till when shall we complete class 11 syllabus? See, actually, I would say that the question is wrongly framed. You have already completed your class 11 syllabus. That is why you are in 12th right now. You need to plan your revision in such a way that say 4 months or 5 months prior to your boards,
you have revised 12th once, twice, thrice, whatever you feel, to a level that you are pretty confident with what you have read. You need to revise 12 so that you can focus the last 4 months at least on your board exams and on your 12th. So till that, you have to finish it to the best of your ability and be confident with it. You have already finished with your 11th. You just have to finish the revision. And revisions are never finished because nothing is enough. So what I would suggest is another point I would like to suggest. So smart study जो हम बोलते हैं, a very important concept is to be there's a concept of the brain that it remembers pictures and something that it sees too often. If I try to remember your names, I will not be able to remember them now. But if I meet you daily, then it will be at my spinal level. बिना दिमाग लगाए मुझे नाम पता है कि ये अर्पिता है, अनन्या है, ये प्रांजल है, ये सार्थक है, right? So इसीलिए whatever you study from, say you're revising your 11th or later on when you revise your 12th, what you should do is that you should study the same thing from the same source every time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने आज एनसीईआरटी से पढ़ा, कल तुमने कोचिंग नोट से पढ़ा, परसों स्कूल के दोस्त के नोट से पढ़ा, उसके अगले दिन तुमने खान एकेडमी की वीडियो से पढ़ लिया. सेम चीज़ को तुम्हें एक ही चीज़ से बार बार पढ़ना है. It will be more beneficial if you revise the same thing 10 times instead of reading 10 different things. So 11th को तुम्हें you have to do it 4 to 5 months at least prior to your board. You have to be thorough with your 11 and you have to re-revise that same thing again and again. Okay, so that means 5 months prior to the board exams, I should be complete with first revision of 11th at least. That is my personal way of doing things. At least that is what I feel कि you should at least give at least 4 to 5 months to the board exam and to 12th exclusively. And so you should not call it the first revision. Why is it your first revision? First revision was when you give your 11th के school के exams or you give your whatever exams. Yeah, So, after 12th, I mean. Yeah, after 12th. So you should be confident. First हो या third हो, you should be confident कि अब मेरी 11th एक बारी के लिए हो चुकी है कि अगर मेरा कल कोई इस पे एग्जाम ले पीएमटी का तो I'm done with it. If you are confident with one revision, it's good. If you are confident with 3, that's good as well. क्योंकि सबकी स्पीड ऑफ रिविजन अलग होती है. कोई बंदा एक बारी में इतने अच्छे से पढ़ता है और टाइम लगा के पढ़ता है कि वो कोई जो तेज तेज पढ़ के जल्दी जल्दी रिवाइज करता है 4 बारी में उतने में पहुंच पाता है. तो इट्स नॉट द नंबर ऑफ रिविजन्स यू that matters. What I am saying is 4 to 5 months at least prior to the boards, you should be confident about your 11th. Does not matter कि कितनी revisions हुई हैं. Okay, thank you so much. You are most welcome. Any other questions? Hello. I have a doubt. Like, okay, Rhythm wants to speak now. No, Sarthak, you go first. I'll ask later. Yes, Sarthak. Okay. So good afternoon. I had a doubt that what problem I am facing a lot in the last few months is managing both institute and school at the same time. I'm not able to do like sometimes I feel like I should focus more on institute when there is an exam in the institute, and then there are when mid semester or semester 1 is coming up. So now I'm thinking that school is more priority. I should give more priority to school. So how to manage both institute and school and be consistent in both while not messing things up? See, that's a very good question. That's something I wanted to talk about. So ये this is an eternal doubt. कोई भी जो भी बंदा PMT के लिए पढ़ रहा है उसका हमेशा से डाउट यही है कि स्कूल और इंस्टीट्यूट में किसको फोकस करे. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉप सीइंग देम एज टू डिफरेंट थिंग्स. दे हैव टू मर्ज. ओनली देन you can study in harmony. But what you want to ask probably and what I feel is the more important question is कि for example मेरे कल परसों स्कूल का हाफ ईयरली है and I am getting chapter 1 to 6 in physics and उसके एक दिन बाद मेरे आकाश का AITS है उसमें chapter 6 to 12 आ रहा है. तो what should I focus on? I think that is what your question is, right? Yes. हाँ. So you have to understand कि that is what you cannot chase exams. तुम्हें समझना है कि तुम्हारी उस पॉइंट पे प्रायोरिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 to 6 अगर आ रहा है आकाश में एंड आई एम लार्जली चैप्टर 1 to 6 फिजिक्स के आई एम लार्जली प्रिपेयरिंग देम
फ्रॉम द आकाश के नोट्स और फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव, मुझे पता है कि स्कूल में तो डेरिवेशन पूछते हैं फिजिक्स की, जो सॉल्व करने होते हैं वो तो हम ऐसे ही कर देंगे आँख बंद करके। तो अगर तुमने वो 1 to 6 नहीं भी पढ़े हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से दिस ऑन अ स्कूल प्लेटफॉर्म, बट अगर तुमने नहीं भी पढ़े और तुम स्कूल में बेयरली पास भी हो जाओ या फेल भी हो जाओ तो डज नॉट मैटर, क्योंकि दैट्स अ हाफ ईयरली और अ वेंसडे टेस्ट, ठीक है। पर लेकिन अब तुम आकाश के लिए फिर बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि एंड ऑफ द डे तो सब कुछ पूछेंगे। या फिर इफ़ यू वांट टू डू इट द अदर वे, सेम बता रहा हूँ मैं, AITS कि AITS है बट उस टाइम पे मेरे स्कूल का हाफ ईयरली है और मैंने उस वाले से बायो का हाफ ईयरली है और फिजिक्स का AITS है, और बायो का हाफ ईयरली में मेरे को NCERT रिवाइज करनी है और मेरा यही प्लान था, और NCERT वैसे भी दोनों जगह बहुत काम आने वाले हैं। तो आई वुड प्रॉब्ली लेट गो ऑफ द फिजिक्स एग्जाम इन आकाश and probably not attempt it, or even if I give it, I would not care about the result and give it with whatever preparation I have basal knowledge के साथ, and I would focus more on the bio का half yearly. But say if the situation is reverse कि वो वाला टॉपिक अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब वो स्कूल के वेंसडे टेस्ट या हाफ ईयरली में आ रहा है तो वो पढ़ा ही नहीं है मैं, पर उससे अच्छा तो फिर मैं दूसरे के लिए पढ़ लूँ ना, कि डोंट हैव टू चेज एग्जाम्स एंड चेज द मार्क्स इन शॉर्ट टर्म टेस्ट, बी इट इन योर स्कूल, बी इट इन योर कोचिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई वॉज इन 11th, तो आई वॉज मतलब मेरा स्कॉलर वॉलर बन जाता था, प्रोफिशिएंसी भी आ जाती थी मेरी, बट व्हेन आई वॉज इन 11th हाफ ईयरलीज आई रिमेंबर, सो हाफ ईयरली में फिजिक्स में ऐसा हुआ था कि जो जो चीज़ें स्कूल वाले पूछ रहे थे वो अभी मैंने पढ़ी नहीं थी ढंग से, कि स्कूल की क्लास सुनी थी बट आकाश से मैंने पढ़ी नहीं थी। तो आई वॉज फेस्ड विद द डायलेमा 3 days बिफोर कि शुड आई कंटिन्यू प्रिपेयरिंग माई ओन ट्यून फॉर द लार्जर गोल जो मैं PMT के लिए पढ़ रहा हूँ, या अभी मैं 3 दिन इसके लिए पढ़ लूँ कि जल्दी जल्दी से बेसिक रिवाइज करके डेरिवेशन वेरिएशन पढ़ लूँ और इसमें पास अच्छे मार्क्स आ जाए कि मेरा स्कॉलर का जो गोल्डन वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल, प्रिंसिपल मेडल, कि वो मिस ना हो जाए इस साल, स्कॉलर ना बनूँ तो आई डिसाइडेड टू गो विद द लार्जर गोल एंड आई प्रैक्टिकली गॉट 36 on 17 में फिजिक्स एग्जाम, द वर्स्ट आई हैव एवर स्कोर्ड। वो भी आई थिंक द टीचर वर काइंड इनफ कि अभिनव के इतने कम कैसे आ रहे हैं, 36 तो दे ही दो। तो वो मैंने डेरिवेशन वेरिएशन करके उसमें कर दिया था। तो वॉट एवर यू डू इट, this is a very dynamic situation. Sometimes you might have to focus more on a particular subject for a coaching or say, or sometimes you might have to focus more on a particular subject for school. That is a very dynamic thing, but you always, whatever you do, you ask yourself that question कि whatever I am studying for right now, am I aiming for a short term gratification of a आकाश की रैंक या स्कूल की अच्छे मार्क्स या स्कूल का स्कॉलर बैज, या am I aiming for something bigger? So you always have to, whenever whatever answers the question कि लार्जर पिक्चर में क्या फिट हो रहा है वही पढ़ना है। Sir, one more doubt I am having. Like in all this discussion, we all, for me, I understand everything that you told and everything that you tell to me that you should plan like this, plan like that. Do not chase for marks and things. Go for the seat. Go for the bigger goal. But then I was thinking one thing, that when the talk comes about parents expectation, what they expect when we generally perform in our school or anywhere, anything exam related or studies related, then there are other things like we parents expect us to get one of the best marks we can get anywhere. It maybe it's a Wednesday test or be the NEET. So yeah, then how to go about that? See, that is what I am telling you. This is just a minimization of what will happen to you later on in life. 10th तक तो तुम्हारा बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहा है ना, कि मार्क्स ले आए, स्कॉलर मिल गया, असेंबली में बढ़िया चल रही जिंदगी. So this is what will happen later on in life when you have to balance a lot of things. Right now you have to balance your school, your PMT preparation, your parents expectations, competition from friends. बहुत सारी चीज़ें है ना अभी. तो अभी see, इसमें the answer to this question would be, the ideal answer would be कि you understand how confident you are. See, I used to school all right in school and I started doing really bad in the middle, especially in physics in 11th, because I couldn't somehow understand physics at all, especially the basic जो physical जो वो होते हैं ना, मैकेनिक्स और बंदर ऊपर नीचे घूम रहे हैं और गाड़ी चलानी है, वो मुझे समझ नहीं आता था कभी. So I started doing pretty badly in my 11th in which physics, both in school as well as in Akash. But I am lucky that my parents don't have too many expectations from me and they let me do whatever I want. But for someone, अगर तुम्हारे parents expect कर रहे हैं तो still you have to understand कि probably they are not, they are, क्या बोलूँ मैं, I think
not mature enough तो नहीं बोलेंगे, but probably they are not in a position to understand कि उनको पता नहीं ना यार, उन्होंने तो PMT नहीं दिया ना कभी, तो उनको larger picture में how will they be more happy that if you probably do not so well in a test today and end of it you do well in your boards and in your PMT and get into a good college, will they be happier then, or will they be happier if you do well right now in a Wednesday test or a half yearly and later on probably not do so well and are not able to get into a decent college for medicine? So you have to understand, you have to take charge sometimes of your life कि अभी भाई गाड़ी चलाएगा, भाई को पता है कि आई विल बी द वन, कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट माई स्कूल टीचर, आई रिस्पेक्ट माई फ्रेंड्स एंड वॉट एवर, बट इस मोमेंट पे मुझे पता है कि भाई यही ज़रूरी है, ये गट फीलिंग है कि मेरे को तो इसके लिए ही पढ़ना है, और एंड ऑफ द डे ये लोग जो अभी गाली दे रहे हैं दे विल बी प्राउड ऑफ मी. सो यू हैव टू follow your inner intuition sometimes, and that is not a very clear cut answer. I cannot like say more on that. I hope you get what I understand. You can contact me personally if you want finer details on this. Okay. Excuse me, sir. Yeah, I think someone is raising the hand. I don't know how it works. Rhythm. Yes, Rhythm can go ahead first. He was saying पहले बोल I रहा think था. she's raising the hand. काफी cool है. Yeah. Sir, I was asking, I had a doubt, like whenever I start studying, like now our class is over after 10 or 20 minutes, and now after when I start studying, and I feel like while studying I get some doubts, like मेरे को इस लाइन में एक डाउट आया अचानक से. So how should I clear that? फिर मेरे को आगे का ढंग से समझ नहीं आता. So that is what friends and teachers are for. So for example, I think that the best way to do it is ki you should have a very good support system of friends. Say when I was in 11th and 12th, I had 4 to 5 core friends, 3 to 4 in institute, 2, 3 in school, and we used to largely aim for the same tests and study in a similar fashion. So we around the same time we were studying the same topics. तो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको उसी टाइम पे फ़ोन करके कॉल करा कि भाई तू बता दे, या उसको नहीं पता तो दूसरे भाई को पता होगा या किसी बहन को पता होगा. तो यू नीड टू बिल्ड अ वेरी नाइस फ्रेंड नेटवर्क, जो कि ठीक है टाइम पास करने के लिए, मज़े करने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, उनको तुम ऐसे मोटिवेशन में मिलती है कि अगर कोई 4 डाउट पूछता है एक दिन में तो तुम्हें लगता है यार ये तो बहुत पढ़ रहा है आज, मैं कैसे नहीं पढ़ रहा. सो दैट इज समथिंग व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर एंड दैट इज व्हाट टीचर्स आर फॉर. I used to ask Shelly ma'am doubts from my coaching about biology, about topics which were not even done in the school yet. So you can always contact your teachers in school, in your coaching, your friends. Anyone would be more than happy to help you. Yeah, I do the same, लेकिन it takes time. Like अगर मैंने अभी मैसेज किया and I was continuing with the subject, probably मैसेज 20-30. फोन करो ना उसको. फोन नहीं उठाते तो कैसा दोस्त है वो तुम्हारा. Okay. मैसेज तो यार अभी आ गया ना व्हाट्सएप, फेसबुक. हम तो लैंडलाइन पे फोन करते थे सीधा और उठाता था, वो नहीं उठाता था तो दूसरा वाला उठाता था, कोई ना कोई तो उठाता ही था. Okay. And how do I plan my day? Like, yes. I didn't get you. Plan your day in what way? How do I explain now? Plan it in a way like I didn't like get the question. Plan it in what way? Like you have to plan it in a way कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो एंड तुम बर्नआउट भी नहीं हो रहे, तुम एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अच्छा खाना भी खा रहे हो, दोस्त से बात भी कर रहे हो 6-8 घंटे के. अभी तो आइडियल टाइम है कि वॉट एवर जो तुम्हारा 8 to 2 होता है स्कूल आई थिंक. सो यू कैन प्लान इट इन सच अ वे कि ये स्कूल है, उसके बाद अब यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम बच गया, एग्जॉशन बच गया, यहाँ पे तो मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, तो अब मैं 1 घंटा सोऊंगी, फिर 4 घंटे पढ़ूंगी, 2 घंटे खेलूंगी, 1 घंटा फोन. ऐसे ही प्लान करना होता है और क्या. Okay. Thank you. वेलकम. Excuse me, sir. या केशव बताओ. Yeah. So I wanted to ask that how to like get into the grind of like the studying, like 8 hours, sitting long hours. How to do that? Like I See think. that Yes. that is what I told you. See, जो भी
जिंदगी में कोई अच्छा काम कर रहा है ना, अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है या अच्छा बॉक्सर है या अच्छा डॉक्टर है या अच्छा इंजीनियर है, तो उसके दो ही तरीके होते हैं भाई, कि ग्राइंड में आने के लिए कोई आता नहीं है ज़बरदस्ती बैठ के कि पापा ने बोला मम्मी ने बोला मेरा भाई डॉक्टर है, ऐसे कोई आज तक नहीं पढ़ाई कर पाया. द ओनली वे टू डू इट, देर आर ओनली टू वेज टू डू इट. देर हैज़ टू बी लव, either for what you're doing right now or for the end result that this study will give you. So if you love your physics, chemistry, bio, which I don't think many people do, and if they do very good, तो या तो तुम्हें पढ़ाई में मज़ा ही आने लग गया, जैसे मुझे अभी पढ़ाई में मज़ा आता है. मेरी बहन मुझे बोलती है कि इतना कितना है कि खाली है तो पढ़ रहा है. अभी मैं खाली हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पढ़ाई पसंद है अभी मेडिसिन की. तो या तो तुम्हें पढ़ाई पसंद हो, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो तुम ग्राइंड में आ गए कि तुम्हें वो 8 घंटे पढ़ाई लगी नहीं रही है. सेकंड तरीका है कि तुम्हें उतनी पढ़ाई पसंद नहीं है, बट जो तुम्हें एंड रिजल्ट है कि इससे मैं डॉक्टर बनूंगा, इससे मेरे को स्कॉलर मिलेगा, इससे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बीट करूंगा, इससे क्या होती है असेंबली में क्लैपिंग होगी, एंड रिजल्ट इतना पसंद है कि तुम वो एंड रिजल्ट को देख के चलते जा रहे हो कि तुम्हें वो एफर्ट फील ही नहीं हो रहा. तो तुम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें या तो पढ़ाई से प्यार हो या उसके एंड रिजल्ट से प्यार हो, तभी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो देयर इज नो अदर वे ऑफ इट. Okay, thank you. वेलकम. I think it's almost time. Any other questions? Sir, Yeah, I can't see you I there. have a very trivial doubt, but sir, you said that nobody is confident in their 11th, and everybody says कि मेरी 11th अच्छी नहीं थी, but everybody says that. Then even people who did well, do you Yeah. know anybody personally who really didn't study, who wasted their entire 11th, but still did reasonably well later on, or are you by chance one of them? No. Thankfully, I am not. I studied pretty hard in my 11th. School में अच्छा नहीं किया था, but अच्छा किया था, पढ़ाई अच्छी की थी. So I have a friend. I can tell you the name. He's Dinesh Sharma. मेरा एक दोस्त था MBBS में मौलाना आज़ाद में. So he had an all India rank of 50 or 60. He got a perfect score. उसका जो हमारे टाइम पे PMT होता था, वो आई थिंक 480 का आता था. उसकी फिजिक्स में 120 में से 120 आए थे, केमिस्ट्री में 120 में से 120 आए थे PMT में, और बायो में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. तो उस बंदे ने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, एंड 12th की बिगिनिंग में उसने डिसाइड किया था कि मुझे PMT देना है. एंड दैट गाय, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, कि जो वो इल्यूजन है ना कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, कि अब तुम पहले इनिशियली तुम चाहते थे कि मेरे को स्कूल से 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिल जाए, अब तुम्हें 6 महीने की छुट्टी मिल गई तो तुम्हें टेंशन है. तो ये जो है ना, हमारी साइकोलॉजी को जीतना है हमें. आई जेन्युइनली नो दैट पर्सन, ही डिडंट स्टडी एट ऑल इन 11th, डिडंट रियली, मतलब उसने AITS में उसकी हज़ारों में रैंक आती थी, एंड फाइनली AIPMT में 50 रैंक आई उसकी. तो that guy is an example, living example, who didn't study for the PMT in 11th at all, and 12th में he studied very hard. 12th में तुम चाहो तो 11 12 दोनों कर सकते हो. अगर तुमने सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ा है ना 11th में, और स्कूल में भी टॉप नहीं किया बस पास हो गए, तो तुम 12th में 11 12 PMT के लिए आराम से कर सकते हो. आई कैन अश्योर यू दिस. Thank you, sir. That's really a morale booster. Thank you. Welcome. Any other questions? Can I ask? Yeah, sure. Palash. I'm not into medicine. I will not probably pursue medicine. But then, do we still have to study the 11th content for related fields in biology? नहीं, see, what I was trying to say was that for people who want to enter into core medicine, मतलब जिनको MBBS करनी है, उनके लिए 11th is important because it's asked in the PMT. The PMT syllabus is 11th and 12th. So whatever you want to do in life, जो भी तुम्हें करना है allied science में, so you have to understand कि उसकी requirement क्या है. If that whatever college or branch you want to get into is solely decided by the board exam, so obviously you don't have to waste time on 11th. Why would you? You would study well for your 12th, score well in your boards, and get into that college or course whatever you want. If there is an entrance, तो अब वो तुम्हें उसका पता करना पड़ेगा कि वो एंट्रेंस में 11th पूछते हैं या सिर्फ 12th ही पूछते हैं. So it's a very I would say कि personalized thing, कि I don't know what you want to do and what are the exact specific requirements for that course or college. So it depends on that. I was talking about the generic PMT वाला जिसकी requirement is 11th and 12th, उसके लिए मैं बता रहा था.
Anisha. And this is Right. cool. I was planning, I have discussed this with my parents as well, that before appearing for NEET, just to get a sense of giving the paper, I would try to give JE as well, not for the marks, but just for the environment. So, is it okay? Yeah. Yeah, it's not a bad idea if you have maths. I didn't have maths, so I never appeared for. I don't have maths. I'm gonna go for 0 marks in maths and just other I'll try. If you are eligible, it's not a bad idea. Giving an exam is never a bad idea. You too don't have maths. I have many friends who got into IIT also, not into IIT Delhi Computer Science, but they got 3-4 हजार अंक आ गई थी उनके IIT JEE में. Who wanted to give the PMT and ऐसे एक तो confidence booster होता है. You get a sense of the exam, and it's not a bad idea. If you are eligible and it's not illegal to do it, then I would say go ahead. It's not a bad idea. Okay, thank you so much. Most welcome. Pranjal. Yeah, You're raising your hand, Pranjali. yeah, it's Pranjal actually. Yeah, sorry. Huh. Yeah, so good afternoon. I just wanted to ask this one. I can't hear you. I can't hear you. Okay, hello. Yeah. Am I audible? Yeah. You are audible now. Hello. Hello. Huh, you are audible. Am I audible now? Yeah, you are audible right now. Yeah. Please let me know if I am audible. Yes, you are audible. Yes, Can you are audible. You're audible. I guess he can't Okay, hear I us. cannot. I think you should put it in the chat box. I think इसमें chat box भी दिख रहा है एक मुझे. Pranjal, you speak Hang out. on a minute. You message it to one Yeah, of your yeah. friends. Yeah. We'll ask it My first. speakers were not working. I can hear you now. So I just wanted to know this one thing that you were interested in medicine for quite some time. So it's just a simple question, not related to NEET preparation. Why did you not consider universities abroad, like medical schools abroad? Just asking, I say. See. That's a nice question. Something that a lot of people have asked me. So, देखो genuinely, मतलब it's a little personal question, so let me answer it that way. I always wanted to do something for India genuinely. दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे दिखावे के लिए नहीं बोल रहा. मुझे तो पॉलिटिशियन या कुछ जेन्युइन सोशल एक्टिविस्ट टाइप बनना था. फिर मुझे पता चला कि ऐसे स्कूल में तो बनने का कोई तरीका नहीं होता सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन. सो आई फाउंड आउट दैट द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू हेल्प पीपल इज टू बिकम अ डॉक्टर. एंड फिर मैंने वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कार्डियोलॉजी पढ़ी थी कि ऐसे हार्ट होता है, उसमें आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ऐसे डालते हैं, ऐसे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है अगर, तो डालते हैं, बलून खुलते हैं तो वो आर्टरी खुल जाती है. तो आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ इट. And I obviously wanted to help people in our country. So, like I feel that अगर तुम करोगे तो you can talk to me later on, but मुझे लगता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इंडिया में भी दिल्ली में इतने डॉक्टर रुकते हैं, बट ये someone is waiting in the lobby, I don't know what that means. तो इतने सारे डॉक्टर रुकते हैं, क्या बोल रहा था. हाँ, so इंडिया में is the place where doctors are needed the most. And I genuinely didn't become a doctor for money or for fame. मतलब I genuinely wanted to help people. एंड आई फील कि इंडिया में भी दिल्ली में इतने डॉक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, इतने पेशेंट नहीं है जितने डॉक्टर हैं. डॉक्टर्स की रियल ज़रूरत तो दिल्ली से थोड़ा बाहर हटके है. सो आई वुड probably in the future like to go to a little probably a little remote. So the idea of going abroad for education was out of question for me. I might probably go for doing a 1-year fellowship or something to learn some skill, but I would never go and probably give my contribution as a doctor there. सरकार के पैसे पे पढ़ाई की है ना यार मैंने. मतलब 2000 रुपये साल की फीस होती है MBBS और MD की यहाँ पे. तो गवर्नमेंट हैज स्पेंट सो मच ऑन मेकिंग मी अ डॉक्टर. दे आर गिविंग मी अ प्रिटी डिसेंट स्टाइपेंड इन माय MD. सो व्हाई वुड आई probably go and serve someone else? Fair point. Thank you. Excuse me, sir. Yeah. Can't we just see that as saving all of humanity only? Why are we categorizing it as saving Indians or any foreign country? नहीं भाई, don't get into that. Obviously that is true. So a lot of my friends from MBBS have gone abroad. उनको भी अच्छा लगता है, तो I have like utmost respect for them. But I personally would like to
given a choice, I would like to serve everyone. But वही है ना कि वो एक जेलीफिश का कॉन्सेप्ट है कि उसमें वो बोलता है कि एक बंदा होता है जो सी शोर पे ना जेलीफिश वापस फेंक रहा होता है, तो वो पूछता है कि तो इसे इसकी नहीं, आई विल डू इट वन एट अ टाइम. सो I can see there's no limit to human potential, but you can help people one at a time. So right now I'm talking to you people from your batch. So you would say कि बाकी batches से क्यों नहीं, बाकी school से क्यों नहीं, बाकी देश से क्यों नहीं. So there is a limit to human potential. मेरा in my personal capacity limited है ना यार. Patient तो मैं एक ही जगह के देख सकता हूँ. Given a choice तो मैं सबको देखूंगा online. But अभी तो जितनी limit है वो I would prefer to do it here. Arpita is raising her hand. Do you suggest that the packages at our institute are enough? Like that's enough study material and we don't need to go beyond that? See, personally, I feel that it's a very personal experience, and I don't think many would agree to that. But what I feel is that you have to go with one thing. That is what I told you at the basic. The basic thing, according to me, the Bible is the NCERT for bio and organic and inorganic. Physical chemistry and physics are more to do with concepts, no matter where you get that from. So if you, whatever you choose, I personally did not read any package from Akash. I just read the NCERT books and I read the notes and concepts and did a few questions, very few questions. So what is more important is that you choose one thing if you like that, or if someone recommends that, and you stick to that. You don't go on reading the same thing from 5 different places. So for organic, inorganic and bio, I personally feel if you read the NCERT and probably some of your institute notes, it's more than enough. But if you want to go ahead with the package, then there's no problem, but stick to that. Re-revise it. Anything that you read but you don't revise is absolutely useless, I'm telling you. You should only bite what you can chew. You should not go on and read 5 different things, but if you don't revise them after 3 months, it's absolutely useless. That is something you must have all understood. We only remember what we revise. We are not superhuman. Some of you might be, but most of us aren't. तो नहीं हो पाता. So the practice questions, the number of practice questions that are there in the module, they are enough? According to me, they are. क्योंकि it's the concepts that matter. अगर तुम 50 क्वेश्चन करते हो, 1000 क्वेश्चन करते हो, तो अगर वो 50 में लार्जली वैरायटी इंक्लूड हो गई है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को री-स्ट्रेंथन करना पड़ता है बार बार पढ़ के. आई पर्सनली ड्यूरिंग माई PMT डेज आई जस्ट रेड द NCERTs, आई रेड द आकाश के नोट्स एक बारी, एंड आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस जो टेस्ट वेस्ट में होते हैं और जो पैकेज में थोड़े बहुत दिए होते हैं, वो भी जो टीचर बोलता है उसमें. एंड आई जस्ट kept revising my notes again and again, even though it might sound stupid, but I revised them like 10-12 times so that कि उस नोट से क्वेश्चन बाहर आएगा तो अगर उस नोट्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और नहीं होगा तो वो दुख नहीं चाहिए. बाहर से आया तो ठीक है भाई, नहीं पढ़ा हमने, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर तुम सेम चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो, अकॉर्डिंग टू मी नोट्स एंड NCERT इज मोर देन इनफ. द प्रॉब्लम इज इन रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट्स. देयर इज नो dearth of concepts in the NCERT and in the notes. Okay, thank you so much. Most welcome. I think it's 2:10. Yeah. Okay. Any other doubts or questions? And I hope Abhinav, you're comfortable. I Yes, know ma'am. despite your medical condition, you have been exerting. I can see that. No. I'm absolutely fine. Yeah. So good afternoon, Kanika ma'am. Kanika ma'am is here. So nice to see you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. We can't. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I think you're muted. I think. Ma'am, I think you're muted. Yeah. Ma'am, your voice is too low. You are unmuted, but voice is low. Okay, let me check. Can you hear me? Yes. Good afternoon, ma'am. So nice to see you. Same here. Oh my God, how are you? I'm good, ma'am. Really, it's a really pleasant surprise to see you. Oh my, I had to make it, you see. I had a class and I was hoping that you would stay on and children will keep you occupied with their queries so that I could Thank you so much. catch a glimpse of Dr. Abhinav now. Thank you. I just caught the last bit that Abhinav was advising you about
about sticking to one thing. And of course, he has been very humble and I would say that not a pompous child ever. I mean, now he's a grown man. Now I don't know what things are like. Obviously, he's here, so he's not a pompous doctor anymore either. So, but yes, Abhinav, I think the biggest thing about Abhinav has been that he has been a very hardworking person. And that consistently probably paid off. And he continues to work hard. That is what I can gather now. And what I like is that, after having been there, done that, he has retained that innocence and humility and compassion. And that passion for what he's very clear about why he is in this profession. At least that's the sense I get, and that gives me immense pride. Thank you, ma'am. So kind of you. I'm so happy about that. Thank you, ma'am. Really encouraged. Thank you so much. Right. So, have you told them how life is in the times of a pandemic? Absolutely. I was. I don't know if you remember or not. I was telling them about the time when in school I had a severe backache and I couldn't come to school for 3 weeks. When I met you, you advised some physiotherapist also. I distinctly remember that. So I was telling them that was a lockdown for me for 3 weeks, and I thoroughly enjoyed it at that time. So I said that you're kind of lucky that you have a longer lockdown without the illness, so you can use it to the maximum, I think. Right. No, but your story of lockdown, doctors have to go through all this also. So it is not as rosy as it appears to be on the outside, right? Yeah. It's actually pretty scary. Actually, I talked to Shelly ma'am about doing this because we have a 1 week duty period and a 1 week quarantine period, wherein we get tested and we rest for a while to ensure that we don't spread infections. But incidentally, last week, while I was on duty, I developed a few symptoms of fever, cough. So I got myself tested and I tested positive. So right now I'm in home isolation. So it's not as rosy as it sounds. It's pretty scary because being tested positive, more than myself, I'm scared of having infected my sister or my parents. So I think that lockdown is absolutely essential. And you're lucky that you are in a school where online classes are being organized. You are in a privileged position where you can sit and study at home. Most of the people in India don't. So I don't think you should probably crib about it. You should be happy that you are at home and you're avoiding the unnecessary travel time and all. Nothing can replace the classroom, but still, for the time being, I think it's a pretty good alternative. Right. Great. Yes, please carry on with your session. I just butted in because I was so excited to see you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. So, Abhinav, yeah, as we can see, how you have evolved as a person, that we can definitely see. And I would like to congratulate you on that. Really. It Thank was you. really, I would say it was really delightful to listen to you because whatever you said made a lot of meaning, a lot of sense. I know it was meant for the students, but it had a lot of messages for me too as a teacher. Sometimes we are bent upon teaching students and sometimes we overlook their problems. We keep asking them, why didn't you join the class? Why aren't you answering? But inside their hearts and inside their brains, a lot of chemistry is happening, which sometimes we fail to look at. So thank you for reminding that to me. And I think it was a very, very nice, actually enjoyable session. Thank you, especially because you've not been keeping well, and despite that, you have risen to the occasion. And I hope everybody has thoroughly enjoyed the session. And in case they have any other doubts, you have already given your number. Yes. They can contact you. And one take-home lesson for all of us, which I really liked, is the process is more important. We need to enjoy. So if you enjoy your process, you will always do it very, very naturally and smoothly. It will not be a tough, crooked journey. Okay. Thank you, Dr. Abhinav. Thank you so much for being with us and hope to see you more often. Yes, ma'am. Definitely. Okay. It's been an honor. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Take care of yourself, Abhinav. That is important. I mean, it is really a concern what you've just shared.
about you being testing positive. Take care of yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. God bless. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. And this is one thing that I would want all the children, when you become doctors, to learn from him is, as I said, humility and also the compassion. I think you yourself would have experienced that. Half the time, I mean, I think all doctors agree to that. 80% of it is the kind of, the talk that the doctor gives you that does all the therapy and all the healing. And it's that 80% that will help the 20% of the students. Absolutely. Yes. Absolutely. Okay. Thank you so much, ma'am. And Thank you, ma'am. yeah. Okay. So we end the session here. Thank you, all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.